Hello children, welcome to Spark Physics by ASHISH Sharma sir, the easy and simple way to learn the concept of physics. I am back with the new video, the important topic vectors. Under vector, we will be discussing today about the dot product of the two vectors, that is also called scalar product of the two vectors, right? We will be taking two vectors A and B, suppose they are inclined at an angle theta. So what is dot product? Dot product of the two vectors A and B is nothing but the product of the magnitudes of the two vectors and the cosine of the angle between the two vectors. जो आपने A और B वेक्टर लिए हैं उनके बीच में the angle theta है, तो A dot B will be equal to magnitude of A, magnitude of B and cosine of the angle between the two vectors, that is cos theta. We can write, instead of mod vector, we can write A B cos theta directly. This A and B itself shows कि ये उसका वेक्टर A का और वेक्टर B का respectively they are the magnitudes. Now what is the geometrical meaning? इसका meaning है क्या, हम किस तरह से और इसको समझ सकते हैं? I have drawn a diagram. OP is vector A, OQ is vector B. If you draw perpendicular from Q on OP, then you see this side, which is the base, can be written as B cos theta, because cos theta is base upon hypotenuse. Right, so base will be equal to hypotenuse into cos theta. You got this, B cos theta. So we have A dot B is equal to AB cos theta. इस formula से A into B cos theta we can write. Now what is this B cos theta? You see, it is nothing but the component of the vector B. कहाँ पर? In the direction of A. So what we can write? It is A, that is magnitude of A vector, into magnitude of component of vector B in the direction of A. हमने अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है A वेक्टर के ऊपर. अब हम उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालें. ये देखिए P से हमने यहाँ B वेक्टर पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो what will be this? It will be A cos theta. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? A B cos theta को B बाहर ले लीजिए, it will be A cos theta. So it will be B into magnitude of component of A in the direction of B. ये जो A cos theta है, what is that? It is nothing but इसका component हुआ उस direction में, isn't it? Resolution of vectors, splitting of vectors पढ़े हैं ना, वही use हो रहा है यहाँ पर. So this component of A in the direction of B vector. Dot product के examples क्या हैं? जैसे आपने पढ़ा है, work is equal to क्या होता है? F dot S, force into perpendicular distance, isn't it? Power is equal to F into V, force into velocity. Okay, so these are the examples. Now we will see properties. अब properties में क्या देखें? Suppose if I say number one, first one, A dot B equal to B dot A. That means the dot product is commutative. आप A को B से multiply कीजिए या B को A से कीजिए, you will get the same value. Second, it is distributive over addition. Listen the word distributive over addition. That means suppose if we write A dot B plus C, this will give you A dot B plus A dot C. A का दोनों में dot product हो जाएगा. Okay. Third, if we want to find out dot product of the two perpendicular vectors, मतलब ये जो angle है A और B के बीच में, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया. So theta is 90 degree. If theta is 90 degree, AB is equal to A dot B is equal to AB cos 90. कितना आता है? Cos 90 is 0. उनका dot product आ जाएगा 0. Next, if theta is 0 degree, then A dot B, what we will be getting? AB cos 0, and what we have? Cos 0 is 1, so A dot B is simply the product of the magnitudes of the two vectors. So when we take 0, that means parallel and acting in the same direction. Okay, but now if we take theta is equal to 180 degree, that means they are parallel, or we can write simply anti-parallel vectors.
एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180 and cos 180 is minus, so a dot b is equal to minus of ab. Now if we write vector with vector itself, हम a का a के साथ यदि प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो a का उसी के साथ मतलब क्या हुआ, एंगल कितना हो गया, 0. So that will be nothing but a into cos 0. Cos 0 कितना होता है, see here cos 0 is 1. So this will give you a square. Now we talk about base vectors. I dot I. What is this? These are the unit vectors along the x-axis, x direction, which is equal to how much? Magnitude of I. Magnitude of I. Cos कितना? 0. Magnitude कितना होता है? 1 into 1 will give you 1. I dot I is 1. Similarly, j dot j is equal to 1, k dot k is equal to 1, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. ओके, व्हाट अबाउट I dot j, 8th, I dot j equal to magnitude of I, magnitude of j, cos I और j मतलब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ना, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होंगे कितना एंगल है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0. सिमिलरली j डॉट k इक्वल टू k डॉट i, सब कितना हो जाएगा, 0. राइट. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट angle between the two vectors, if I write angle between two vectors, we have a dot b equal to magnitude of a, magnitude of b into cos theta. So we can write simply cos theta equal to dot product of the two vectors upon magnitude of a, magnitude of b. This way we will be finding एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. अब हम करेंगे कैसे, देखिए, सपोज वी हैव वेक्टर a इज इक्वल टू, उसका कंपोनेंट ax है, i डायरेक्शन x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में ay है, z डायरेक्शन में az है. नाउ सिमिलरली वी कैन हैव b bxi, byj, bz. ओके, सो a डॉट b we can write how much? You write this axi plus ayj plus azk dot bxi byj bzk इक्वल टू, हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, है ना. जब i का आप i के साथ करेंगे तब 1 मिलेगा, लेकिन i का j के साथ 0, i का k के साथ 0. इसका मतलब जब आप i का इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो किसके साथ केवल 1 होना है, i वाले के साथ. तो हम लिख सकते हैं ax bx प्लस, अब ay j को कर दीजिए अंदर तो केवल j के साथ 1 मिलेगा. वी कैन राइट ay by प्लस सिमिलरली z az bz. दिस इज योर a dot b. Hope these properties are clear. Using these properties, we will be solving few questions. Thank you for watching the video till the end. I will be coming with few numerical problems on the dot product so that your all these properties will be clear. Right? Don't forget to like, share and subscribe. Thank you everyone.